Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukbhav bhavet. May everyone be happy and may everyone be free of disease. May everyone have good luck and may everyone be free of bad days. Dear esteemed guests, have you noticed that our first prayer is for everyone to be happy? And we equally pray for everyone to be free of bad days. I read it a long time ago, and as a psychologist, I believe it every day now that our lives are first experienced within our minds, which essentially means all of what we experience happens in our mind first before it translates into our reality. I, Bhavya Raj Arora, a veteran volunteer and member of MHFI, am thrilled to extend a warm welcome to all of you to the much anticipated panel discussion with honorable parliamentarians to deliberate upon the topic Mental Health is a Universal Right. This gathering promises to be an enlightening and insightful exchange of ideas featuring distinguished honorable parliamentarians who are passionate advocates for mental health reform within India. This event is brought to you by Mental Health Foundation India and is organized by Indian Psychiatry Society and Delhi Psychiatry Society. The Indian Psychiatry Society, IPS, is an esteemed professional organization dedicated to the advancement of psychiatric knowledge, research, and patient care in India. Comprising a network of dedicated mental health professionals, IPS has been a key player in shaping the landscape of mental health in the country. Their contributions to research, training, and policy advocacy have been invaluable in promoting mental health as a universal right. The Delhi Psychiatry Society, DPS, is a regional chapter of IPS representing the vibrant community of mental health experts in the National Capital Territory of Delhi. DPS has consistently championed the cause of mental health awareness and has actively engaged in community outreach programs, research initiatives, and collaborations with stakeholders to ensure that quality mental health services are accessible to all. Mental Health Foundation India has been at the forefront of promoting mental well-being and providing support to those in need. Our organization has tirelessly worked towards reducing the stigma associated with mental health issues and advocating for policy changes to ensure that mental health is recognized as a universal right. With a commitment to fostering a mentally healthy society, MHFI has initiated numerous programs and campaigns to address the mental health challenges faced by individuals across the nation. In today's discussion, our distinguished panelists, who also serve as honorable parliamentarians, will share their perspectives on the importance of mental health as a universal right. Together, we aim to explore avenues for legislative change and policy reforms that will strengthen mental health services and support for all citizens within the country. We look forward to a robust and productive discussion that will contribute to the ongoing efforts to prioritize mental health on the national agenda. We hope to work together to ensure that every individual in our great nation, Bharat, has the opportunity to enjoy good mental health and access to the care they absolutely deserve. Thank you for joining us today, all the members who are attending as well in this critical conversation, and we hope this event serves as a catalyst for positive change in the realm of mental health within India. I now invite our wonderful MCs, Ria and Kopal, to take over and set the agenda for today. I warmly welcome you. Thank you for being here. Arogyam paramam bhagyam swasthyam sarvartha sadhanam arogyavardhanam prapya sthitha dharma prakshit, which means health is the ultimate wealth and mental health यानी मानसिक स्वास्थ्य का उचित होना, उत्तम होना बहुत आवश्यक है. Namaskar, Sat Sri Akal, Vadakkam, Adab, and a very good afternoon to all the honorable parliamentarians, panelists, speakers, and volunteers present here. I, Kopal, and I, Ria,
are honored to host the upcoming section of the panel discussion with parliamentarians on the theme Mental Health is a Universal Right. Today, we have distinguished members of Parliament joining us today, highlighting the critical role of policy and collaboration in addressing mental health issues in our country. To proceed with the event, I would like to invite Dr. Nand Kumar, Chairman of the Parliamentary Subcommittee B, Honorary President of Mental Health Foundation India, Professor of Psychiatry, AIMS, Delhi, to extend a warm welcome to all our guests and set the tone for today's discussion. Thank you, Kopal. So my greetings and gratitudes for being here on Sunday, second half, when the cricket match is also going on. And I'm really deeply indebted and grateful to our Honorable Member of Parliament, Javed Ali Khan Saab, who is here physically. And you know that how busy a Member of Parliament is, because he has to look the constituency also, or the Delhi also, and they are genuinely very busy. We can't understand, unless we know them very well. So thank you, sir, for being here. And I welcome Dr. Vinay Kumar, who is the president of IPS, and he's a very renowned poet also. And he's a very few psychiatrists who are well-known poet. And sir's leadership is tremendous. In fact, it has a huge impact. And I'm in IPS because of him. And this program of very unique kind is being conducted because of him, because this is genuinely a very different kind of program. We have Member of Parliament sitting with us. We have Member of Parliaments online on the Zoom link, approximately 10 Member of Parliaments that we are going to discuss about mental health. So it is a very different kind of program. And this is just because of Dr. Vinay Kumar able to do that. Online, we have our other office bearer, Dr. Lakshmikant Rathi. Welcome, sir. Dr. Ashish Brahma, he is a General Secretary, IPS. Dr. O.P. Singh, editor. I'm sure he is online somewhere. Dr. Harish Shetty is very eminent psychiatrist. He is advisor of this Parliamentary Affairs Subcommittee. So welcome, sir. Dr. Umesh and Dr. Manushri, which is sitting here, and Dr. Vishal. They are the part of the IPS membership committee. So, in addition to that, I really welcome the Member of Parliament who has either joined or about to join. And these Member of Parliaments are very eminent in their field. First, I would like to mention Dr. Satish Gautam. He is a Member of Parliament, Lok Sabha, from the BJP from Aligarh. So he is joining shortly with us. Then Dr. Shantanu Sen, most of us are aware of. He is a doctor by profession and Member of Parliament. He is also our Parliamentary Committee Chairman in the AIMS Delhi. Then Dr. N.R. Ilangu is also doctor. He's from DMK and he's a Member of Parliament from the southern part of the country. Then Dr. Ravangra Narjari, he's a Member of Parliament from the UPP, from Raj Sabha, Assam. Dileshwar Kamatji, he's from Lok Sabha, Bihar, from JDU. E.T. Muhammad Basir Sahab, he is Member of Parliament from Kerala. And Pratma Mandal Madam, she is also member of our Parliamentary Committee in the AIMS. She is from TMC, Lok Sabha. And A.D. Singh from Raj Sabha, Bihar, he is from RJD. Professor Manoj Kumar Jha, very eminent parliamentarian, and we must have heard him in the Lok Sabha. Then Prince Paswan, very young person, very young parliamentarian, and we are in touch with. So with this, not only that, but I'm very grateful to the MHF India, Dr. Sanjay Kumar, Director, Honorary Director, Dr. Nishad, Dr. Meeta, and the system runs on some backbone, and these backbones are Bhavya, Srishti, Abhinav, Kopal, and all the young people sitting over here. So I'm so grateful to you for coming here. So today we are assembled here to have a panel discussion on World Mental Health Day. In fact, as a doctor, as a professional, when we discuss about mental health, so we discuss about stigma. We discuss about stigma, और हम ये बात करते हैं कि बहुत स्टिग्मा है, डॉक्टरों का नंबर कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत डिप्रेशन है, बट ये हर जगह है. अगर आप देखें तो अगर आप कंपेयर करें पिछले 20 साल में या पिछले 15 साल में,
तो डॉक्टरों का नंबर बढ़ा है, जो साइकोलॉजिस्ट का नंबर भी बढ़ा है, बट उसके अलावा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ा है। और ये इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ और बातें भी हैं, जो कि मेंटल हेल्थ इज नॉट प्योर डोमेन ऑफ साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, ये केवल हमारे बस की बात नहीं है। तो यहाँ आता है सबसे महत्वपूर्ण रोल, वो है हमारे पार्लियामेंटेरियंस का, जो सांसद का जो कानून बनाते हैं। इसलिए कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा हेल्थ है जो कि मल्टीपल फैक्टर उसको अफेक्ट करता है, सोशल साइकोलॉजिकल के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट, इकोनॉमी, पॉलिसी इशू, social distortion, political turmoil, it all affects mental health. Or no one is better than address the mental health in this aspect than better than our members of parliament, who can give us perhaps better direction also. Because as a doctor, as a medical professional, we mostly stuck. हम लोग अक्सर वहां फंस जाते हैं कि डॉक्टर और बढ़ाएं, नर्सेस और बढ़ाएं, और हेल्थ को बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बट रोकें कैसे? जो असल अहम मुद्दा है कि कैसे सब कुछ हो नहीं, और उस लेवल पे जाके जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, दे कैन परहैप्स गाइड अस वेल. With this, I will stop here so that we can listen to our eminent guest, and hand over to you. Thank you. Thank you, sir, for your warm words. Now, I would like to invite Dr. T.S.S. Rao, immediate past General Secretary of Indian Psychiatry Society. Sir, we would welcome you and we would like to enlighten us with your warm words. Javed Saab, Dr. Vinay Kumar, President, Indian Psychiatric Society, Nanda Kumar, Manushree, and all the dignitaries and friends in this hall. How many minutes I'm supposed to speak? Stay. Of course, everybody would be wondering why World Mental Health Day or Mental Health Day need to be celebrated. There are very special days, say for example, for cardiology, for leprosy, for vitiligo. There are many such things are there. This also comes under that particular section. World Federation of Mental Health came to the conclusion that this is one of the area where people are not aware, quite a bit neglected, and many people who need to be actually helped, somehow they are not receiving help. Many of these type of ideas came into being. And to correct it, to spread the message that everybody is aware of this particular idea, this particular day was declared as World Mental Health Day, and so also this whole week, World Mental Health Week, and many of us celebrate all through the month, World Health Mental Health Month. The very basic idea is actually to spread the message that any one of us can get, of course, mental illness. That is one. Second one, we are all maybe all right, but then being well means actually we can improve quite a bit. Is there anybody in this hall who doesn't have any worries? Because a lot of young people are sitting here. Anybody can raise the hand? See, if you raise the hand, immediately Vinay Kumar will make a card and see that where you need to be admitted and treated. You got the point? It is almost for all practical purposes taken that we all being alive is to be stressful. So this is part and parcel of our life. How to manage? By being aware of that we are going through stress. So that means that will give us a lot of strength and idea that how best this particular thing can be tackled. And when we say, see, if I ask you to imagine somebody having mental illness,
what comes to your mind? Many of the times, somebody who is not wearing proper clothes, in a ragged dress, wandering around here, there, singing songs and a whole lot of these things. But if you look at the psychiatry departments now, what we have in general hospitals, it's one of the major revolution that has happened. We hardly find anybody in that particular fashion. One is the range of treatments that have come. In fact, all those type of things has been knocked off. Even if today you are finding somebody like that, it only indicates that neither the relatives nor the concerned people are not taking care of them. Now, nobody need to suffer in that particular fashion. The third one, we get headache, we get back pain, we get so many problems. They're all indicators of one way or other psychological issues only. What I am trying to convey to you, all of us, in fact, it affects only somebody, it doesn't affect me. In fact, one of the past president of World Psychiatric Association mentioning, everybody thinks that it affects everybody else, but I am totally free from it. But if you look at either ourselves or the family around or the society where you are living or the country where you are actually, that problems are present. Of course, studies. Can it take about 5-10 minutes like that, or the time is there, na? I know, I really don't know how the program is organized. How much time? 2 minutes. 2 minutes. The problem is the psychiatrist taking the mic is we talk till somebody goes mad. No, you got the point? This is one of the very common weakness. So, world over, people have done studies to indicate how commonly this is, and wherever people are there, people have found psychiatric problems. It's a universal problem. Countries, studies have some different numbers and ideas. It all indicates how you have done the study. One of the very common thing is some of you already are exposed to hospital setups and all of that. You go to any department, 1/3 psychiatric problems, 1/3 psychiatric plus medical problems, another 1/3 medical problems. That means almost about 60-70 directly, indirectly, they're actually. This year, the theme is actually related to the human rights. What it means is everybody has dignity, and just like anybody can suffer from any illness, psychiatric illness is also part and parcel of that. If we are able to change our attitude in that particular direction, I think the whole picture changes. And many young people, you are all sitting, you're all change agents. That means you have to take up that responsibility to see that this message is conveyed to everybody that, in fact, they need to be treated, respected, and actually whole range of treatments are available to actually take care of them. So this is called as 3-3-3 formula. That means almost all the people who are there can be divided. Psychiatry has gone very much beyond what we basically used to talk about mental major madness and related things. Hardly we use those terminologies nowadays. All of these things are recognized as some specific problems, and range of treatments are available and they can be treated. Those disorders which can be corrected, which become all right, maximum disorders are there in psychiatry. Unfortunately, we go wrongly because somebody is suffering from something all through the life, he has to take treatment. Those few specific disorders, we actually refer to almost every disorder. One of the example is you want to see a mental patient means you have to go to the near the mirror and see. If you can get that particular idea, I think that solves. And so many emerging branches. Somebody takes alcohol, somebody takes drugs. In fact, this is extremely common problem in particularly North India in general. Alcohol down south, extremely common. This is one of the areas. Psychosomatic medicine. You talk about any illness for that matter, cardiovascular, respiratory, genitourinary, orthopedic, neurological. There is no illness which doesn't have. One of the point is, okay. Good. So, extremely common. The message here is actually this much that Indian Psychiatric Society has decided that new Mental Health Care Act and a lot of other such things that have come. We all need to be aware of what are the issues.
And we are all governed by our elected representatives. In fact, one of the major area with whom we can have some discussion and convey our exactly issues involved. That way, in fact, this is going to impact on everybody. And as they are our leaders, they would be of great use. And from that particular angle, this particular committee, in fact, Parliamentary Affairs Committee, has done a great job and organizing such a program at such a short notice in a capital like Delhi, and on that too Sunday with so many programs. In fact, kudos to them and congratulations to them. Thank you very, very much for giving me this opportunity. Thank you, Dr. Rao, for your kind words. As you touched upon various topics that how mental health is a universal right and some domains of psychiatry. Now we would like to invite Dr. O.P. Singh, editor of Indian Psychiatric Society. Good afternoon and welcome to everybody. Am I audible? Yes. Yes. So good afternoon and welcome to everybody. This has been great job done by the Parliamentary Committee. I will not take much time. We know that after COVID, mental health has come into the focus, and people, planners, policymakers are now aware that mental health should be given priority. And in this regard, I just want to mention only one thing, that the comprehensive plan, health plan has, or WHO had said that to decrease mortality and morbidity due to non-communicable diseases, we should promote mental health. So it is not only the mental illnesses which are important, but if we want to reduce mortality and morbidity due to diabetes, due to hypertension, due to other disorders, there is still, we need to take care of mental health. So mental health should come out of the, now it has come out of in the open. And though it was always the elephant in the room, but people are not recognizing it, but it is now getting due importance, and we all should commit to the mental health of the people, and policies should be taken which help that people can get treatment, because treatment gap is still 90% almost in India. So it should reach to everybody. It should be affordable and accessible. And for that, we need a lot of policy changes, which has been dictated into the our policy plans 2014 of government, and Mental Health Act also. So best wishes. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. And I would like to thank you for taking your time and connecting with us online. Now we would like to invite Dr. Alim Siddiqui, Honorary Treasurer of the Indian Psychiatric Society, to say a few words. Thank you so much. Thank you so much. And my respect and regard to the esteemed panel. I think one theme I'll pick up regarding this, how to bring mental health to everybody. I think one of the most important things that we need to discuss is we need to come out of this shyness. The medicines that are used to treat mental illnesses have some bad side effects. So, but just my appeal, humble appeal to everyone is, the medications that are used to treat mental illnesses are very safe. They are very effective when used in the hands of a trained psychiatrist, a trained doctor. We are trained to deal with medication, to deal with their side effects. They do not damage your liver and kidneys. They are not addictive. Some of them may be, but only when they are used ineffectively. So just my humble request is to not malign the medications, to accept the treatment, because this goes a long way in reducing stigma. People are ill, they are not seeking treatment, and they are afraid to seek treatment, because अगर दवा खा लिया तो जिंदगी भर खाना पड़ेगा और liver kidney हमारा खराब हो जाएगा. This is a proper myth. This is a full-on myth that needs to be tackled on. Thank you so much for inviting me. All the best for the program. I think a wonderful effort is being done, and we'll need more and more of such things. Thank you. Back to you, organizers.
Thank you, sir. I think you shared a few noteworthy warnings. Now we would like to invite Dr. K.K. Mishra, immediate past treasurer of Indian Psychiatry Society, to enlighten us with few words. Honorable MPs, our Indian Psychiatry Society, the Secretary and the past Secretary of Indian Psychiatry Society, the Editor and Treasurer of Indian Psychiatry Society, and Dr. Nand Kumar and the Huma Manusri and the whole group was make a big effort in this areas of mental health on this special occasion of World Mental Health Week and the Mental Health Days. As we focus on, mental health has been a primary focus starting from childhood to the older generations, to the old age group. So in all these groups, these are affected by some or other mental illness or preventive mental health aspects. So from the childhood, like abuse, trauma, the special groups like women, the special group like geriatric population, they're all the vulnerable groups which are affected due to some or other factors of which affect their mental health. So on this special occasion, I'll urge to the of the parliamentarian groups to look into all these special areas which we can prevent the traumatic events in their life, and that will be helpful in the positive mental health, especially for the vulnerable groups. And with this short speech, I give my blessings and I wish all the best. We'll achieve something by this discussion among all the parliamentarians. Thank you all. Thank you. Thank you, sir, for your enlightening words. And again, I would like to thank you for taking out your time and joining online. Now we would like to invite Dr. Harish Shetty of the Indian Psychiatric Society to say a few words. He is the advisor of Parliamentary Affairs Committee. Congratulations, the committee and my friend Dr. Nand Kumar and others. I'm so happy to be here, and I think it's the beginning of a great initiative. It's the beginning of a long journey. Unless the leaders are sensitized, the Praja will take a long time. And I'm so happy that this is a session for parliamentarians. Maybe a few will join, but that's a great beginning. It takes a few drops to actually build an ocean. One drop at a time, and that's what we are doing. Indian revolutions are always slow, unlike the French guillotine. And I'm so happy to be with each one of you. All the best. I'll be in the session till the end. Thank you. Thank you, sir, for your warm words. And now we would proceed with the introductions. Next, we would like to invite Dr. Abdul Majid, President of the Executive Committee of the Indian Psychiatric Society of the North Zone. Thank you very much, everyone. And I think it's a dream come true that we are discussing something which is of utmost importance, as the theme of the Mental Health Day of this year is exactly mental health is a universal human right. And why not? Because we have seen COVID, we have seen natural and man-made disasters in our country and outside countries as well. And the way हम लोगों को बोलते हैं कि हार्ट का तकलीफ है, दवाई उम्र भर लेना पड़ेगा, गुर्दे का तकलीफ है, म्यादे का तकलीफ है, जब लेकिन मानसिक रोग की बात आती है तो स्टिग्मा आ जाता है कि दिमाग को तकलीफ नहीं हो सकता। लेकिन ये जानना जरूरी है। हमारे साथ पॉलिटिकल सर्कल के लीडर्स हैं, आपका धन्यवाद है सर। लेकिन आपका बहुत इन्फ्लुएंस रहता है हमारी सोसाइटी पे, चाहे पॉलिटिकल सर्कल हो या सोशल सर्कल हो। आपकी बहुत हमारी ज़रूरत है आपकी, और वी नीड यू एवरी टाइम, ऑल द टाइम। और आपकी बात बहुत वैल्यू रखती है। अगर आप अपने सर्कल्स में ये बात छेड़ देते हैं कि मेंटल हेल्थ उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कार्डियक हेल्थ है, पल्मोनरी हेल्थ है या बाकी तकलीफें हैं,
क्योंकि वही सेल्स इस दिल को भी बनाती हैं, वही सेल्स इस दिमाग को भी बनाती हैं। और हम इंसान इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास एक पूरा मैच्योर दिमाग है, और इस दिमाग को भी कभी कभार स्ट्रेस हो सकता है, और कई लोग फिर मानसिक रोग से जूझ सकते हैं। उनको इलाज करने की जरूरत है, और लोगों को आगाह करने की, अवेयर करने की जरूरत है। ये एक ऐसी तकलीफ है जैसे ब्लड प्रेशर की है, जैसे डायबिटीज की है, जैसे कोई और तकलीफ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया IPS ऑफिस बेयरर्स led by our president Vinay Kumar ji, and the parliamentarians, and more important, I think, who have organized this event, Nand Kumar ji, Manushri ji, and everyone. Thank you all. I think this was a need of hour, and finally our word has been heard and it has been listened, and I'm sure that the deliberations would take a very nice course, and will have a very positive and a significant outcome at the end of the meeting. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you once again. Now we would like to invite Dr. Vinay Kumar. Moving ahead, we would like to invite Dr. Vinay Kumar, MD in Psychiatry, who serves as the National President of Indian Psychiatry Society, for enlightening us with his thoughts on the importance of addressing mental health in our nation and our today's theme, which is mental health, a universal right. We welcome you, sir. Good afternoon, everybody. Those who are here and those who are online. So, first of all, I have to address parliamentarians, especially Khan Sahab, who is with us. He has taken time from his busy schedule to be here. We are obliged. We were talking to him, we were talking together, and we are talking regarding few things. And I realize that we have got with us a very influential person who can help us in future. Friends, this program is being organized at a very crucial juncture. First, most important thing is World Mental Health Day is on 10th of October. So this is World Mental Health Week, and we are meeting in World Mental Health Week. Secondly, Government of India has formed a committee to look into Mental Health Care Act. And that committee has started functioning. And yesterday only at Indian Psychiatric Society headquarters at Gurgaon, we were sitting for hours and hours to discuss what could be the consensus point for the entire country, for all of us to send to government for amendments in Mental Health Care Act. So with these two important events, this day has become very important. Most important thing first, World Mental Health Day. The theme of the World Mental Health Day for this year is mental health is universal human right. When you say universal human right, it includes entire universe. It includes everybody, all human beings. And all human beings have right, mental health right. This can be analyzed in different ways. First important thing is we have right to mental health. Everybody has right to mental health. And when there is a right to mental health, there is a duty to mental health also. Because right and duty both are different aspects of same coin. Duty of everybody. If you have a right to mental health, then it's duty of everybody, all people who understand what is wrong and right, to take care of his or her mental health. Number one. Number two, those who are governing, those who are ruling, those who are managing society, those who are managing country's affairs, and especially health affairs, it's their duty to provide situations in which everybody right to mental health is taken care of. Second important thing. Third important thing, if somebody gets mentally ill, develops mental illness,
then his right to treatment should be protected. Mental Health Care Act 2017 beautifully does this. And another important thing is the right of a person who is with mental illness. That is also very important. Because what happens if somebody is having mental illness, people used to discriminate. Government, at government level, at private level, all levels, they will not get jobs. There will be difficulty in marriage. So lots of issues are involved with this. So the question of right has to be understood in bigger perspective, very big perspective. It's not about, it seems that one sentence has been given by World Federation of Mental Health for this year, but this includes lots of things. It reminds everybody, governments, hospitals, organizations, we doctors, and family members, those who take care of patients, and if all citizens of the world, that you have right to mental health. It means you have duty to mental health. And if you are having problems with mental health, think about getting proper treatment, and doctors should treat properly, and also society should take care of their rights. So this is regarding the theme. Now I have to discuss few things regarding today's panel discussion. The first most important thing is, what is the magnitude of problem? आज हिंदुस्तान में लैंसेट में पब्लिश्ड रिसर्च के हिसाब से, वो रिसर्च इंडिया में हुआ था, पूरे देश के सारे राज्यों को लिया गया था उसमें, एंड दैट सर्वे, दैट स्टडी गिव्स द मैसेज दैट 7 में से 1 आदमी, 1 person in 7 is having mental illness in this country. This is a huge data. Huge number of patients we are having in our country. Second important thing came out of that in 20 years, the burden of disease has doubled. It's not only due to population explosion. It's not only due to that. It's due to multiple factors. So, first point of discussion for this today's is that problem is increasing. How to handle it? Second important thing is, but regarding this problem, how to handle this? How we can handle this problem? Our health budget is 1 lakh crore, and only 1% of this is spent on mental health. 1 लाख करोड़ के बजट में सिर्फ 1% मेंटल हेल्थ के लिए. कैसे होगा? कैसे समस्या का समाधान होगा? इतने बड़े देश के लोगों का कैसे उतने से आप संभालेंगे? दूसरी चीज, हमारे देश में इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मैंने अभी इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव हुआ था हाल में, तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट. तो उसमें मैंने डिमांड किया था, मैंने ये कहा था कि आई एम सेटिंग टोन फॉर टुडेज पार्लियामेंट डिस्कशन विद पार्लियामेंटेरियंस डिस्कशन. मैंने कहा था उसमें कि वी हैव 1 निमहांस इन साउथ इंडिया, इन बैंगलोर. वी नीड एटलीस्ट 5 निमहांस in India, in each zone. You can divide India in South Zone, North Zone. Indian Psychiatric Society is divided. So for all zones, we need 1 NIMHANS. If we can have too many aims in country, why not too many NIMHANS? Why I am saying this? Because to have a NIMHANS, you need a huge amount of budget, nearly 800 crores to 900 crores per year. So the moment you think of establishing 5 NIMHANS, mental health segment will get huge amount of budget for that. So that is one. Then each state should have 1 center of excellence. तो फिर अगेन वहां बजट हो जाएगा, फिर वहां मिल जाएगा. Thirdly, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पे आते हैं. मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में देयर इज अ प्रॉमिस कि हम हर किसी के मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे. वो योग क्षेम बहाम्यम जो गीता में कहा गया, कृष्ण ने कहा था, एक्जैक्टली उसमें है कि हर किसी के मेंटल हेल्थ का हम गवर्नमेंट केयर करेगी. तो उसके लिए उसमें इंश्योरेंस का प्रोविजन भी है. ये बहुत अच्छी बात है कि अभी गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस के सेक्टर को जोड़ना शुरू किया, उस पर बात शुरू हुई है. लेकिन कैसे किया जाएगा
उसको कैसे और हम लोग बेहतर तरीके से कर सकें, उस पर बहुत सब राइडर्स लगे हुए हैं, सारी चीजें सामने नहीं आ रही हैं, उसको थोड़ा लिबरल करने की जरूरत है, सो दैट कि नॉट सीरियसली मेंटली इल पीपल, बल्कि जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो इतना बड़ा कहने में लगता है कि डिप्रेशन ठीक हो जाता है, डिप्रेशन ठीक हो जाता है, लेकिन जो देश में सुसाइड्स हो रहे हैं उसका मेजर कारण वही है। तो उनको भी उसका बेनिफिट मिले, सुसाइड अटेम्प्टर्स को नहीं मिलता है प्राइवेट सेक्टर पे इंश्योरेंस, वो मिले, बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे आगे डिस्कशन हो सकता है। एंड mental health care act, because we are addressing parliamentarians also today, there are lots of issues in this mental health care act which needs to be amended, and amendment can be done only with help of, I remember when mental health care act 2017 was being passed in parliament, only 1 or 2 MPs talked about that very silently, दोनों तरफ से। तो जब उसकी जो प्रॉब्लम्स है, मैं कहता हूं कि भाई सारी पार्टियों ने मिलकर ये तय किया है कि किसी का अगर दिमाग खराब हो जाए और बहुत ज्यादा खराब हो जाए और परिवार में उसको संभालने वाला कोई ना हो, अगर हो भी तो उसको इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास सीधे नहीं जा सकते। ये कानून कहता है कि मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड में पहले एप्लीकेशन लगाओ, उनसे परमिशन लो, फिर जाके इलाज करो। ऐसे ऐसे क्लॉजेज हैं उसमें। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में फैमिली को गोल कर दिया गया है, फैमिली है ही नहीं, परिवार है ही नहीं कहीं। उसमें डलता है कि जब मरीज इलाज के लिए आए, साइकियाट्रिस्ट पूछे कि हु इज योर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव। पेशेंट ने अगर किसी को नॉमिनेट नहीं किया है तो प्रॉब्लम है, जबकि उसमें होना चाहिए था कि अगर परिवार और उसके रक्त संबंधी या निकट मित्र ना हो तो वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव की बात हो, लेकिन ऐसा कर दिया गया है। तो इन सारी चीजों में सुधार की जरूरत है, अमेंडमेंट की जरूरत है। और अभी चूंकि कमेटी बनी है और इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के इनिशिएटिव पे बनी है कमेटी, वी आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट कि हमने जो लिखा बार बार उसकी वजह से कमेटी बनी है। और उस कमेटी में हम एक कॉन्सेंसस पूरे कंट्री में हमने सर्वे किया, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने पूरे कंट्री के साइकियाट्रिस्ट ने अपना इनपुट दिया है, उसके बेसिस पे हम एक कंसेंसस पेपर तैयार कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो हम लोग गवर्नमेंट को देंगे। और पार्लियामेंटेरियंस जो हमारे बीच हैं, ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस, सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम बाकी सारे पार्लियामेंटेरियंस तक भी उन चीजों को पहुंचाएंगे, ताकि जब इस बार बात उठे पार्लियामेंट में तो ज्यादातर लोग पार्टिसिपेट करें और पब्लिक के इंटरेस्ट में चीजें पास हो। तीसरा चीज है सुसाइड, स्टूडेंट सुसाइड, बहुत बड़ा इशू है ये। इसको आप लोग लाइटली लिया जा रहा है, या अखबार में खबर आई, बात लोगों ने आंसू बहा दिए, बात खत्म हो गई, नहीं, ये डिस्कस होने की जरूरत है, पार्लियामेंट में डिस्कस होने की जरूरत है, क्यों हो रहा है। जो एक चीज सबसे ज्यादा दिख रही है, मैं जो बोल रहा हूं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, मुझे पता है कि इसके लिए मुझे कुछ झेलना भी पड़ सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सुसाइड कहां हो रहा है, ज्यादा कौन बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में घुसते हैं, फेलियर ज्यादा मिलता है, बाकी आंकड़ों से भारी वो पड़ रहा है। तो इस ग्राइंड में, इस चक्की में क्यों पीसना उनको उस तरह से, आप क्यों नहीं सिस्टम चेंज कर सकते। अभी हो क्या गया है, स्कूल्स हो गए हैं नॉन अटेंडिंग, कोई स्कूल जाने, बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में रहो, आप कोचिंग करो और कोचिंग सेंटर से डिग्री लेके आओ। तो जो अजीब सा है, एक सुपर स्कूल्स जो बन गए हैं पूरे कंट्री में, ठीक है कोचिंग सेंटर्स हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से कि स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल टेकन केयर ऑफ हियर, जबकि वहां होता नहीं है। उनको आप कोचिंग का भी, कोर्स का भी, इसका भी, और लगातार उनको आप काम करवा रहे हो, उनको रिलीफ नहीं है, वो क्रिएटिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते ठीक से, स्पोर्ट्स नहीं कर पाते। तो आप सिलेबस को और सारी चीजों को उस तरह से करो कि वो ठीक हो, और नॉन अटेंडिंग स्कूल का कल्चर कंट्री में बंद होना चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस तक मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, वहां पे ये आवाज उठाएं कि पूरे देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मशरूमी की वजह से नॉन अटेंडिंग स्कूल्स भर गए हैं, उनको संभालने की जरूरत है। अगर इसको हम लोग ठीक कर दें तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट सुसाइड काफी हद तक हट जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मूड चेंज करो, मैसेज ये दो कि तुमको बेस्ट, किसी एक फील्ड में बेस्ट मत बनो, कहीं भी बेस्ट बन सकते हो, कुछ भी अच्छा कर सकते हो, उनके लिए ढेर सारे ऑप्शंस हो, सारे ऑप्शंस कम्युनिकेट हो उन तक। लेकिन ये सारी बातें सोसाइटी में हम लोग जगह जगह कहते हैं। ये पहला मौका है हमारे इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के लिए है कि हम पार्लियामेंटेरियन से मुखातिब हैं। हम डॉक्टर नंद कुमार साहब, डॉक्टर हरीश शेट्टी, डॉक्टर उमेश नागपुरकर, डॉक्टर मनुश्री गुप्ता जो कमेटी को लीड कर रहे हैं, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, खासकर नंद कुमार साहब की, कि जिनकी वजह से हम आज दिल्ली में बैठकर पार्लियामेंटेरियन से बात कर पा रहे हैं।
तो ऐसे ये सारे इश्यूज हैं, इन पे हम उनकी राय भी चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आप बाकी पार्लियामेंटेरियन से भी हमें मिलवाएं, और कभी नए पार्लियामेंट में अगर आप लोग चाहें तो एक ऐसी बैठक हो सकती है कि जहां हम लोग शामिल हो सकें और बातें कर सकें। बस इसी के साथ धन्यवाद, और आप सारे पार्लियामेंटेरियंस का स्वागत। Thank you, sir, for taking out the time to join us on a Sunday afternoon and sharing the concerns in the field of mental health that we need to keep in mind going forward. अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिलेश्वर कामत साहब, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बिहार। सर, आपका स्वागत है। सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर म्यूटेड है। बंद कर दिया। हेलो हेलो जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार जी नमस्कार सर, आपका स्वागत। मैं दिलेश्वर कामत एमपी सुपौल बोल रहा हूँ। जी सर, नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार, मैं आपसे जुड़ा हूँ। जी। सर, हम लोग एक गोष्ठी कर रहे हैं, जैसा आपको बताया था हम लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो आज मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, माननीय सांसद हैं, उनसे हम लोग कुछ चाहते हैं मार्गदर्शन, कुछ जानना चाहते हैं आपके विचार, ताकि हम लोग और कैसे बेहतर काम करें और कैसे हम मानसिक स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएं। सर, आप लोगों का काफी बड़ा इसमें रोल है, काफी बड़ी आपकी जिम्मेदारी होती है सांसद सदस्य की। जी नहीं, एक्चुअली तो हमारे देश के लिए तो एम्स जो है बहुत सार्थक काम दे रहा है, बहुत इससे फायदा हो रहा है, पूरे भारतवर्ष के लोगों को इससे फायदा हो रहा है, और इस पर लोगों को विश्वास भी है। तो थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जो काफी लोग, जितने भारतवर्ष के लोग हैं, सब चाहते हैं मेरी चिकित्सा एम्स में हो, लेकिन उतने संसाधन तो है नहीं, और उतने लोगों की चिकित्सा संभव हो नहीं रही। इसलिए आप लोगों ने विभिन्न जगहों में एम्स की स्थापना किए हैं। हेलो जी जी, विभिन्न जगहों में एम्स की स्थापना हुई है जी, लेकिन फिर भी अभी तक जो है संसाधन उसमें उपलब्ध नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स जितना होना चाहिए, जो सब सामान होना चाहिए, वो सब अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर लोग की भी कमी है। फलस्वरूप सारे लोग चाहते हैं दिल्ली एम्स में ही अपना ट्रीटमेंट करने के लिए। जी, वो एम्स को लेके प्रोग्राम ये उतना नहीं है। एम्स के नंद कुमार जी हमारे साथ, हमारे लीडर हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैं इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, डॉक्टर विनय कुमार। हम आपसे एक गुजारिश ये करना चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य का जो बजट है देश का, वो 1 लाख करोड़ है, और उसका सिर्फ 1% मानसिक स्वास्थ्य पे खर्च होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बजट बढ़ने की जरूरत है। एक तो गुजारिश है कि इसको ध्यान में रखें। दूसरी बात यह है कि नीमहैंस देश में एक है बेंगलोर में। हम इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की तरफ से हम मांग कर रहे हैं कि देश में कम से कम हर जोन में, हर क्षेत्र में 5 एक हो, मतलब 5 नीमहैंस हो, तो देश की पूरी आबादी को ज्यादा मदद मिलेगी, और हर राज्य में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हो। अपने बिहार में बीरबल में जैसे है, उसको अगर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो बड़ी बात होगी। तो गुजारिश जी, तो निवेदन ये है कि इसको ध्यान में रखा जाए। दूसरा निवेदन ये था कि मेंटल हेल्थ एक्ट 2017, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 पास हुआ है, और उसमें कई गड़बड़ियां हैं। हम लोग के निवेदन पे सरकार ने कमेटी भी बनाई है। हम उनको सलाह और अच्छे से दे रहे हैं। जब संसद तक पहुंचे, या पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटी जो हेल्थ को लेकर कमेटी है, उन तक बात पहुंचे, तो हम सब आपकी मदद, आप लोगों की चाहेंगे कि हम लोग की बात वहां तक पहुंचाई जाए। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। आपका सेशन एकदम ठीक है। हम लोग उसमें सहयोग करेंगे, हम लोग उसका समर्थन करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी विषय में आपको अगर इन मुद्दों पे कुछ अगर जोड़ सकें तो बड़ी खुशी होगी। नहीं, ठीक है, ये जो आपका ये आएगा इसका समर्थन करेंगे,
इसको कैसे पास किया जाए, इसमें सुधार करके उसके लिए हम लोग एकजुट हैं, रहेंगे। जी, और मेरा दल से समर्थन मिलेगा। जी जी जी। एक और बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि हमारे बच्चे बहुत खास तौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगे हैं, उनकी आत्महत्या बढ़ रही है अपने देश में। और ये बहुत दुखद बात है कि हम अपने प्रतिभाशाली युवाओं को खो रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास नहीं कर रहे हैं। तो एक ये भी मुद्दा है महत्वपूर्ण। आप लोग चाहें तो संसद में इस सवाल को उठाएंगे तो कितनी अच्छी बात होगी कि हमारे शिक्षा प्रणाली में जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है उसके माहौल को बदला जाए। और बच्चे जो स्कूल छोड़ के कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक स्वास्थ्य का वातावरण होता है, शिक्षक साथ होते हैं, दोस्त साथ होते हैं और अपनी बातें करते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब पहुंच जाते हैं तो वहां पर लगातार सब एक दूसरे से गला काट प्रतियोगिता में लग जाते हैं, समय नहीं मिलता है, अच्छे से जी नहीं पाते हैं। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की मशरूमिंग जो बहुत ज्यादा हुई है, इस पर भी कुछ चर्चा होने की जरूरत है संसद में। और स्कूल्स हो गए नॉन अटेंडिंग, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल से केवल अटेंडेंस मिल जाता है लास्ट में। तो ये एक गैर कानूनी किस्म का काम धंधा देश में चल रहा है। जरूरत इस बात की है कि संसद में इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। नहीं, सही में ये बात ठीक है। अभी जितने देखे जैसे कोटा में बहुत सा आत्महत्या लोगों ने किया है, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है। और इसका लोग क्यों जा रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने क्यों जा रहे हैं? इसका माने जो सरकारी संस्था है उसमें ठीक से पढ़ाई नहीं होती है, उसमें सुधार की जरूरत जी। ये यदि सुधर जाएगा, पढ़ाई ठीक से होगी तो लोग नहीं जाएंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। जी नहीं, वो एक नॉन अटेंडिंग स्कूल जो हो रहा है, छापा मार के देखा जाए कि स्कूल चल रहा है और बच्चे उसमें नहीं पहुंच रहे हैं, वहां से केवल सर्टिफिकेट मिलता है, कोचिंग में पढ़ते हैं। इस पे रोक लगाने के लिए सरकार अगर कुछ करे तो बड़ी बात होगी सर। है, बिहार में ऐसा कर दिया है। बिहार में तो आप सुने होंगे, नहीं बिहार में 9 से लेकर के 4 बजे तक कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट फंक्शन नहीं करे। हाँ, लेकिन स्कूल नॉन अटेंडिंग अभी भी चल रहे हैं बिहार में। पटना से हूँ सर। और आप जी आप ही की सरकार है। अगर ये करा दे मतलब मुझे सरकार से ही मुखातिब हूँ तो ये कहूंगा आप करा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं, सही बात है, इसको करना चाहिए। से बीमार होकर इस वजह से बहुत आ रहे हैं सर। तो मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश पहुंचा दें कि इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के अध्यक्ष ने हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि नॉन अटेंडिंग स्कूल का कल्चर खत्म हो बिहार में। जी सही। उसके ऊपर हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और खास करके हमारे जो प्रधान सचिव है उसको जो दिया गया है, काफी उस पर मुस्तैदी के साथ वो काम कर रहे हैं और बहुत सुधार हो रहा है जी। एक पत्र अगर अलग से लिख दिया जाता तो बड़ी मेहरबानी होती सर सरकार को। ठीक है, जरूर लिखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। बहुत बहुत Thank you, Vinay Kumar sir, for sharing the concerns in the field of mental health that we need to keep in mind going forward. And I would also like to thank Dileshwar sir for joining us online and taking out the time on a Sunday afternoon. Like Nand sir said, we can only imagine how difficult it must be for the parliamentarians to accommodate time for panel discussions in their busy schedule. Next. Moving ahead with today's event, I would like to invite our chief guest for today, Javed Ali Khan. He served as a president of Lieutenant Student Organization All India Youth Federation during 1993 to 1994. He moved on from student politics to join Samajwadi Party in 1994, and he has also served as member of Rajya Sabha from 2014 to 2020. He has been appointed as a member of the Coordination Committee of the Indian National Developmental Inclusion Alliance in Mumbai Convention this year in September 2023. Sir, we would welcome you to enlighten us with few words. डॉक्टर नंद कुमार जी, डॉक्टर विनय कुमार जी, राव साहब, और यहाँ उपस्थित सभी बच्चे भी कह सकता हूं कुछ लोगों को तो और युवा साथी भी कह सकता हूं, युवतियां भी कह सकता हूं, कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, कुछ मेंटल हेल्थ के
फील्ड में काम करने वाले वॉलंटियर्स भी यहाँ निश्चित रूप से होंगे। आपने यहाँ मुझे अवसर दिया आप लोगों से बात करने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि न तो मैं कभी मेडिकल साइंस से मेरा कोई रिश्ता रहा, सिवाय इसके कि कभी जाकर के दवा ले लेते हैं और 10-5 टैबलेट्स के नाम याद हो गए हैं, पता नहीं वो कब आउटडेटेड हो जाती हैं, लेने जाओ तो केमिस्ट कहता है कि ये अब चल नहीं रही, ये बंद हो गई है। और कभी मेंटल हेल्थ के फील्ड में भी अपना कोई अनुभव नहीं है। हम तो स्टूडेंट लाइफ से एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में अपने सफर की शुरुआत की, और इसे खुशनसीबी कह लीजिए या संयोग कह लीजिए कि जब उम्र के आधी उम्र के बाद, पता नहीं आधी है या चौथाई है या 60% है, लेकिन उत्तरार्ध में जब अपने जीवन के आए तो पार्लियामेंट का मेंबर बनने का मौका मिल गया। इसलिए मेरी जो बातें आपसे होंगी उसे साइंस की कसौटी पर कसने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने कितनी बातें सही कह दी, कितनी बातें गलत कह दी, कितनों में तथ्य है, सब्सटेंस है, नहीं है। उसको बहुत ज्यादा उस एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश का जो संविधान है, या पहले हम मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 जो है, इससे पहले ये मैंने परसों नरसों से ही पढ़ना शुरू किया इस विषय में। 87 में इस प्रकार का एक्ट हमारे देश के अंदर बना था, और फिर उसमें कुछ संशोधनों की आवश्यकता हुई तो उसको 2017 में ही दोबारा से उसको बनाया गया है। अभी विनय कुमार जी ने बताया कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। कोई भी कानून किसी भी गतिशील समाज में अपने आप में पूर्ण होता नहीं है, उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ कमियां समय के साथ उत्पन्न हो जाती हैं, तो समय समय पर उस पर संशोधन होते रहना चाहिए। ये एक नजरिया सरकारों को और पार्लियामेंट के लोगों को रखना चाहिए। एक बड़ी परेशानी जब से मैं एमपी बना हूं, मैं तब से तो देख रहा हूं, पहले थी या नहीं थी, और जो एमपीज पार्लियामेंटेरियन आपके साथ लाइन पे जुड़ेंगे ऑनलाइन, वो अपने अनुभवों से बताएंगे अगर उसमें कोई सीनियर होंगे तो। लेकिन 2014 के बाद से तो मैं देख रहा हूं, और मुझे यहां कहते हुए कोई संकोच भी नहीं है कि पार्लियामेंटेरियंस की भूमिका अब कानून बनाने में जितनी लिखत पढ़त में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, व्यवहार में इतनी है नहीं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं। मैं 2014 से 2020 तक एमपी था। 6 साल में मेरी 6 गैरहाजिरी थी पार्लियामेंट से सिर्फ, लेकिन मैंने उन 6 वर्षों में, और अभी मैं कोई 1.25 साल से एमपी हूं, अभी तक मेरी एक भी गैरहाजिरी नहीं है पिछले इस टर्म के अंदर। मैंने एक भी ऐसा मौका नहीं देखा कि किसी मेंबर ने किसी एक्ट में, किसी कानून में कोई संशोधन पेश किया हो और उसको मान लिया गया हो। नॉट इवन ए सिंगल। सैकड़ों एक्ट पास हुए हैं और उससे ज्यादा एक्ट जो है वो रिपील हुए हैं, और शायद ही कोई ऐसा एक्ट रहा हो जिस पर पुलंदे का पुलंदा अमेंडमेंट्स का पेश न किया जाता हो मेंबर्स की तरफ से। लेकिन ऐसी प्रतिष्ठा सरकार बना करके संसद में एक्ट पेश करती है कि अगर इसमें कोई कॉमा भी हटवाओगे, फुल स्टॉप भी हटवाओगे, या बीच में कहीं एंड या और भी लगाओगे,
तो हम बहुमत के आधार पर आपके संशोधन को बुलडोज कर देंगे, पास नहीं होने देंगे। और आखिर में होता यह है कि पक्ष में जो है वो हां कहें और विपक्ष में जो है वो ना कहें, और फिर ध्वनि मत से या कभी कभी वोटिंग से उन अमेंडमेंट्स को गिरा दिया जाता है। डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है, हमें जीवन में भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए, व्यवहार में भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए, और बगैर एकोमोडेटिव हुए डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं होता है। अगर बहुमत के आधार पर, संख्या के आधार पर हम किसी सही बात को भी मानने में ये समझें कि हमारी प्रतिष्ठा पर आघात हो जाएगा कि साहब हमने कानून बनाया और एक एमपी ने उसमें संशोधन पेश कर दिया, इसमें हमारी नाक कट जाएगी या हमारा सर नीचा हो जाएगा, तो ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट नहीं है। तो मैं बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि संसदीय जीवन का जो मेरा अनुभव है 2014 के बाद से, मैंने आज तक एक भी संशोधन जो किसी सदस्य के द्वारा लाया गया हो, मैंने पार्लियामेंट के अंदर पास होते हुए नहीं देखा। और मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन ऐसी स्थिति शायद बनी रहे, बाद में बदल जाए तो मैं कह नहीं सकता, या आज उस बात पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। हमारे संविधान की विशेषता यह है, अभी पिछले दिनों संविधान को लेकर के बहुत चर्चा हुई, किसी ने इसे दोबारा से लिखने को कह दिया, और कुछ लोग तो कहते ही रहते हैं संविधान को भी, गांधी जी को भी, हमारे देश की परंपराओं को भी, आजादी के आंदोलन को भी। वो एक राजनीतिक विषय है, उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे संविधान की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसके अंदर बहुत संक्षेप में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। मिसाल के तौर पर, जब सम्मान से जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 है शायद, उसमें दे दिया गया, तो फिर अगर देश को संचालित करने वाले पूरे तरीके से ईमानदार हो जाएं, मैं भी, आप भी, संचालित करने वालों से, मैं सिर्फ सरकार से मेरा आश्रय नहीं है, जब हमने अपने नागरिकों को सम्मान से जीवन जीने का अधिकार दिया है, तो फिर ये मेंटल हेल्थ के लिए अलग कानून बनाओ, फिजिकल हेल्थ के लिए अलग कानून बनाओ, फिर इसकी क्या जरूरत है? अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है और उसकी उपेक्षा होती है, उसको इलाज नहीं होता है, चाहे वो कार्डिक हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे जिस्म के किसी दूसरे हिस्से का समस्या हो, या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो, तो फिर वो जीवन के जीने का जो अधिकार दिया है उस पर सवालिया निशान लगता है। इसलिए हमारे राज्य को, स्टेट को, ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए थी। जब आपने अपने नागरिकों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, तो उनके रहने की, उनके खाने की, उनके इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन अब वो नहीं हो पाई। आज हमारे सामने ये समस्याएं चल रही हैं। मैं समझता हूं कि मेंटल हेल्थ का विषय दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है, और किसी भी समाज में, मेरा अपना मानना है, ये मैं कोई एक्सपर्ट कमेंट नहीं दे रहा हूं, जहां विषमताएं होंगी, जहां नाइंसाफी होगी, जहां गैर बराबरी होगी, वहां मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना एक बहुत बड़ा, या कह दीजिए लगभग असंभव जैसी स्थिति है कि आप विषमताओं और गैर बराबरी वाले समाज के अंदर मेंटल हेल्थ को परफेक्ट कर देंगे और सब लोग जो हैं मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। वो संभव नहीं है। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूलों का
जिक्र विनय कुमार जी कर रहे थे, जब हम पढ़ते थे 77 में 10वीं क्लास की, 79 में 12वीं क्लास की, उससे पहले अध्यापक जो ट्यूशन पढ़ाते थे घरों पर, अपने घर पढ़ाने तो अध्यापक जाते ही नहीं थे। जब अध्यापक से आप ये उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि वो आपके घर आकर के ट्यूशन पढ़ाएगा। ट्यूटर जब नहीं होते थे घर पे, जो आजकल उपलब्ध है बहुत आसानी के साथ, तो हम ये सुनते थे कि कानूनी तौर पर मना था। मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, क्योंकि जब मैं कानून वगैरह तो देखना जानता नहीं था, अब मैंने कभी चेक भी नहीं किया बाद में। तो लोग जो है चोरी छुपे ट्यूशन पढ़ाते थे, कुछ आमदनी के लिए पढ़ाते थे, क्योंकि उस वक्त सैलरीज इतनी ज्यादा नहीं होती थी, और गांव से, मतलब अपने गांव से जाकर के दूसरे शहर में लोग अध्यापन का कार्य करते थे उन विद्यालयों में, तो वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपने घर पर सुबह और शाम में 2 बैच पढ़ा लिया करते थे, 10-10, 12-12 लोगों के। तो कई बार वो ये सुनने में आता था कि ट्यूशन पढ़ाना मना है, और जब स्कूलों का इंस्पेक्शन होता था, जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स विजिट करते थे, तो मुझे खूब याद है कि वो बच्चों से पूछते थे कि तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए तो कोई अध्यापक प्रेशराइज नहीं कर रहा है। और ज्यादातर बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे ऐसे होते थे जो ट्यूशन की तरफ को जाते नहीं थे। लेकिन आज ये इतना बड़ा कारोबार बन गया है हमारे देश के अंदर, स्कूल ठप हो रहे हैं और विज्ञापन पे विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि साहब हमारे यहां पढ़ोगे तो जो है आपको पास होने की निश्चित गारंटी है। हम जब पढ़ते थे तब क्या होता था कि ठीक, जिस किसी का दाखला किसी कोर्स में नहीं होता था तो वो साइकोलॉजी में दाखला लेता था। मतलब इतनी लोगों के अंदर साइकोलॉजी के प्रति, मतलब इतनी उपेक्षा का शिकार था ये सब्जेक्ट कि पॉलिटिकल साइंस में नहीं हो रहा, इकोनॉमिक्स में नहीं हो रहा। खैर मैं तो सोशल साइंस में नहीं रहा, मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था, लेकिन हम यूनिवर्सिटी में अपनी देखते थे तो धीरे से उसको बताते थे कि साइकोलॉजी में और भर देना, वहां पक्का तुम्हारा दाखला हो जाएगा। और साइकोलॉजी के जो अध्यापक थे, पहले मेरे यूनिवर्सिटी में जामिया मिलिया में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट सेपरेट नहीं था, वो सोशियोलॉजी के अंतर्गत चलता था। 1 या 2 टीचर्स उसके थे, तो वो हम लोगों को, चूंकि हम लोग स्टूडेंट लीडर बन गए थे और एक लंबे अरसे तक वहां रहते थे, कैंपस में एक्टिव थे, तो जो साइकोलॉजी के टीचर्स होते थे वो हम लोगों को पकड़ के कहते थे कि भाई कुछ हमारा सब्जेक्ट भी लोगों को दिलवाओ। ये मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं आपको। 70s और 80s का, ये मिड 80s तक तो यही स्थिति थी कि साइकोलॉजी के टीचर से अप्रोच करते थे हम जैसे एक्टिव लोगों को कि भाई कुछ बच्चों को हमारे यहाँ दाखिले के लिए प्रेरित करो। लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी मैंने पिछले दिनों एक जगह में था तो मुझे बताया गया कि आज जो है साइकोलॉजी में दाखला मिलना मुश्किल है, दाखला नहीं हो पा रहा, और सीट बढ़ाने के लिए हर जगह प्रयास हो रहे हैं कि साइकोलॉजी की सीट्स जो हैं वो ग्रेजुएशन के लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर बढ़ाई जाएं। और जहां तक जॉब का सवाल है उसमें भी बहुत ह्यूज डिमांड, भारत के अंदर भी और भारत से बाहर भी, विदेशों में भी साइकेट्रिस्ट की या जो साइकोलॉजी पढ़े हुए बच्चे हैं उनकी काफी बढ़ी हुई है। तो ये तो एक खुशी की बात है कि चलो सब साइकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं और उनकी डिमांड भी है, उन्हें बहुत ज्यादा दिनों तक अनएम्प्लॉयड नहीं रहना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ चिंता ये भी है कि चूंकि इस फील्ड में उनकी जरूरत बढ़ रही है, इसका मतलब कहीं हम मानसिक रोगों से भी ग्रस्त होने का जो हमारा क्रम है वो भी बढ़ रहा है, उसकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब ये कैसे हल हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते हैं, मैं तो जब बहुत बड़े फ्रेमवर्क में देखता हूं तो ये आइसोलेटेड प्रॉब्लम है नहीं। ये कोई बुखार या डेंगू जैसा
समस्या नहीं है जो वायरल होके हो गई हो या हवा में कुछ परेशानी आ गई या पानी जो है हमने प्रदूषित पी लिया उससे ये समस्या हो गई हो। मैंने शुरू में ही कहा अपने बातचीत के कि ये जहां विषमताएं होंगी, जहां गैर बराबरी होगी, वहां ये होने के ज्यादा चांसेस हैं। और अब वो काम बहुत लंबा है, उसमें मैं अपील तो आपसे कर सकता हूं कि आप भी अपनी अपनी जगहों पर जहां हैं उन परिस्थितियों से निपटने के लिए जैसा भी एक्शन ले सकते हैं आप लीजिए। मैं नहीं कहता कि आप राजनीति में ही एक्टिव हो जाइए, आप राजनीति में एक्टिव हो जाएंगे तो इस फील्ड में कौन काम करेगा, या जो जहां एक्टिव है वहां रहे, लेकिन इस चीजों को सोचना चाहिए गंभीरता के साथ कि क्या हो सकता है बेहतर। रहा पार्लियामेंट्री कमेटी का सवाल जो बनी है, उसका तो खैर मुझे इल्म नहीं है, मैं चूंकि स्वास्थ्य संबंधी कमेटी का सदस्य नहीं हूं। हालांकि मैं एक जो कंसल्टेटिव कमेटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर चलती है उसका मैं मेंबर हूं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का मैं मेंबर नहीं हूं। तो स्टैंडिंग कमेटी ने अभी पिछले दिनों ही अगस्त के महीने में इसी समस्या पर पार्लियामेंट में एक अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अगस्त 2023 में ही वो रिपोर्ट, जो चेयरमैन हैं हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी के कलिता जी असम वाले, और उन्होंने उसमें ये जो हेल्थ सर्वे हुआ था 15 और 16 में उसका भी काफी जिक्र किया है। और उस हेल्थ सर्वे के अंदर जो बिंदु उजागर किए गए थे, हेल्थ कमेटी ने ये कहा है कि वो जस की तस स्थिति है, जितनी आवश्यकता है उस पर काम करने की वो हुआ नहीं है। तो हेल्थ कमेटी का तो बड़ा सकारात्मक रुख है। वो कमेटी की रिपोर्ट भी मेरे पास है और आप लोगों के पास तो जरूर ही होगी, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। तो पार्लियामेंट में आप ये चाहें कि पार्लियामेंटेरियंस उसमें बहुत कुछ कर दें, वो संभव नहीं है। ये सरकार के लेवल पर इसमें थोड़े प्रयास होने की आवश्यकता है। तो इतना कीजिए कि आप अपनी सोसाइटीज जो आपकी हैं या जो हमारे साथी एक्टिव हैं इस फील्ड में, वो सीधे सीधे सरकार से संपर्क करें। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, बढ़िया स्वास्थ्य मंत्री हैं, मिलनसार भी हैं। वो हेल्थ के विषय के बारे में उनका क्या एक्सपर्टाइज है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काम करने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। हम भी उनसे छोटी मोटी सिफारिशें करते हैं तो बहुत तत्परता से वो उसका संज्ञान लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इतने बड़े मसले को लेकर के अगर उनके साथ बैठा जाए आपको, तो उसमें तो हम लोगों का कुछ रोल हो सकता है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि जो एक्ट सरकार का आएगा हम उसमें संशोधन करके जो आप बता रहे हैं वो उसमें जुड़वा दें, तो माफ करना, ये स्थिति किसी एमपी की भी है नहीं। खैर, आपने मुझे बुलाया और मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि भाई ना तो मैं एक्सपर्ट हूं, ना इस विषय का कोई मैं कभी विद्यार्थी रहा हूं। जितना मेरी समझ में आया मैंने आपसे जिक्र किया। कोई उसमें कमी वेशी हो तो इसको बहुत गंभीरता से न लें कमियों को, और बातें सही लगी हों तो उन्हें मान लीजिए। लेकिन आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में और विकराल स्थिति ना हो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे देश की। मैं आप लोगों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि आप इसमें योगदान कर रहे हैं, उसको सही रखने में आप कामयाब हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और नंद कुमार जी का मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। आपके कहे हुए शब्द हम आपने जिस तरीके से बताया कि आपके ट्यूशन के चर्चे, आपके कोचिंग सीट्स और साइकोलॉजी की सीट्स, और वंस अगेन हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं फॉर टुडे, फॉर ग्रेसिंग अस टुडे विथ योर प्रेजेंस। एंड मूविंग अहेड, because today's highlight is the engaging panel discussion where distinguished members of parliament will share their insights and strategies concerning mental health.
So let us welcome them one by one and initiate the panel discussion today. Moving ahead, I would like to invite the moderator for today's panel discussion, Abhinav Singh Katiyar, sir. He is the project lead of MI Hope, a flagship project of Mental Health Foundation India, and assistant professor at Daulat Ram College, University of Delhi. We welcome you, sir. Namaskar, everyone, and all the dignitaries. माहौल एक्चुअली सेट हो चुका है, तो अब इसके कॉन्टेक्स्ट को और थोड़ा बड़ा करते हैं. एंड एमएचएफ का 20 years का जो विजन एंड मिशन है सिंस 2003, starting from a very basic awareness campaign in slums to organizing the 10th annual event of festival in the country in AIIMS. बहुत बड़ी जर्नी की है एमएचएफ इंडिया ने, and it has been a flagship event throughout these 20 years. Not just this, MHFI has also followed up with the recent trends. For example, the recent COVID-19 pushed all of us to move towards telemental health. In the country today, we have the Telemanas, which is a very easily accessible mental health service portal. Before Telemanas was launched on October 2020, on the world, I remember it's 4th October 2020, in AIIMS, in the presence of the director, we launched the My Hope platform, which enabled the access of mental health care throughout the country. And currently, MHFI runs 8 centers in the country, including Kota, Sikar, Hardoi, and Bulandshahr. And it has also started its centers in University of Delhi colleges. I would like to take this discussion further and also quote what recent news media is talking about. I was just looking at the number of psychiatrists and clinical psychologists present in the country. So a rough figure, which the Times of India mentions, is that there are around 3,372 clinical psychologists in the country, and of them 162 are being registered in Delhi, okay, of the data which they have shown, and followed by Kerala. And in terms of the numbers with psychiatrists, there are 9,000 psychiatrists. The numbers can be up and down, but this is the ratio. And the number of psychiatrists relates to 0.75 for 1 lakh people. So that's definitely not sustainable. And the biggest problem is that the concentration is in the center, that Delhi and major metropolitan cities. But very little is done for the periphery work. So with this thought, I would like to rope in one of the attendees, if sir is available online, is there connected online? Yes, Dr. Vishal Jhabra, who is also, I think the DPS belongs to DPS, Delhi Psychiatric Society, and he's the president. And we would like to hear your views, sir, on the access of mental health care, and especially in the context of concentration of psychiatrists and mental health care professionals within Delhi, how we can reach, ensure they reach outside the main city. Please, sir. Hi, good afternoon, everyone. Thank you for this opportunity to speak. Can you? Yes, sir, you're audible. Please go ahead. So, thank you for this opportunity. I thank Dr. Anand Kumar, IPS President Dr. Vinay sir, and Manushri for inviting me. I think Delhi Psychiatric Society has around 300 to 400 members, psychiatrists and psychologists combined. Like you were very rightly pointing out, fortunately, unfortunately, if you see, majority of psychiatrists are in metro cities in India, whether it's Delhi, Bangalore, Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Chennai. And the moment you spread out, you go 100 kilometers away from Delhi, there is a deficiency of psychiatrists for kilometers and kilometers together. Like you will not maybe find, in Delhi, you may find 20 psychiatrists in 1 or 2 kilometer radius, but outside Delhi, once you go out, maybe for 100 kilometers, you may have 1 psychiatrist or even less than that. So one of the good ways to bridge this gap is, जैसे आपने telemanas की बात करी, we have teleconsultations now. The good thing which has come out of COVID
for us as psychiatrists is that people have realized the importance of teleconsultations. And thankfully, teleconsultation guidelines have been rolled out by the ministry. It's been IPS also come out with those recommendations through NIMHANS, and that has taken up. So the best way for us living in cities to help patients out, and which we're already doing actually at my private level, as I have my private practice also, is to reach out to patients in smaller towns and villages where thankfully we have very good broadband connectivity now, and with the help of smartphones, because again, India में smartphone penetration is very, very high. अब आज की डेट में और काफी लोगों को पता है how to, and WhatsApp is almost ubiquitous in India. मतलब शायद ही कोई है इंडिया में जो WhatsApp नहीं यूज करता as a social media platform. उसको यूज करते हुए I think we should formulate further policies and campaigns to educate people कि हम through WhatsApp we can easily reach out to people in rural and semi-urban areas without leaving. मतलब क्योंकि अगर हम सोचे कि हम साइकियाट्रिस्ट को एम्प्लॉय कर देंगे छोटे टाउन्स में, या उसके लिए एक पॉलिसी चेंज लाना पड़ेगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, विल टेक अ लॉट ऑफ मैन पावर. सो अभी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, आई थिंक उसको हमें यूटिलाइज करते हुए वी शुड ट्राई एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ टेलीकंसल्टेशन बीइंग अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री. और हमें ट्राई करना चाहिए थ्रू IPS एंड थ्रू लोकल बॉडीज जैसे DPS हो गया या चैप्टर्स ऑफ IAPP हो गया, IPS हो गए, to look at and help reaching out to the masses. This is what we should do, I think. So these are my brief comments on this. All right. Thank you very much, sir. Now I would move. All right. So now I would also like to rope in respected Dr. Harish Shetty, sir, because sir is a very famous figure in terms of psychiatry and medical science in the field of mental health, and we look up to him for the relevant issues which are pressing our society. Sir, with very respectfully, would like to know what is the India-specific challenge in the field of mental health broadly, and also what India can contribute on a world platform. I know we do conferences and we do a lot of publications, but is there something more than what we can than that if we could do? Please, sir. So kindly unmute. Yes. Let us contribute to the Indian platform first. Stigma is decreasing, but it's still huge. I would like to see a mental health camp in the parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha, initiated by the Prime Minister, not because of the happenings of the recent past, but because if MPs and their spouses and the children go and rate themselves and do a mental checkup, everybody will follow. I would want this to be replicated in all educational institutions like IITs. In the IIT, you have Mood Indigo, you have Tech Fest. Why is there no mental health camp where the director of the IIT with his wife goes and checks himself up along with HODs, students will follow. I think evolution starts from the top. Revolution starts from below. So this is the first thing, massive mental health camps to break stigma. That is number one. Number two, which is also very, very important, is across the country, Anganwadi workers, health workers go house to house to screen people for dengue, malaria. And there's a massive tuberculosis eradication program. Why cannot we use our Anganwadi workers or health workers or ASHA workers to screen for mental health issues? Mental science is not rocket science. Mental science is not philosophy either. It's mathematics. But why do we wait for specialists all the time? Mental health issues are becoming a pandemic. And when there's a pandemic or an endemic, very close to being endemic, campaigns are the key. When the central government can launch Swachh Bharat Abhiyan, Ujjwala Abhiyan, and in COVID, they could go house to house to screen people for COVID. So central government has a will. State governments also have the capacity
Why not have a mental health campaign as big as Swachh Bharat Abhiyan, as big as Ujjwala, as big as intervention during COVID? That is point number 3. Point number 4, which is very important, positive mental health. Positive mental health would mean 50% of the time in all educational institutions should be reserved for mental health enhancement, for building positive mental health. And what is very important for us is, for positive mental health, we don't need 4 Nimans, as somebody said. I think it was a president. We don't need 4 Nimans. And you announce 4 Nimans, you think, and he said that he will get a budget. You will not get the budget. We need satellite centers in every district. There can be 2 or 3 or 4 centers of excellence for research and guidance, but accessible satellite services which are of high intensity and high expertise for every Indian. And as he said, Dr. Vinay is saying, mental health is a right, and that is why we don't want elephants like AIMS and NIMANS. We don't want that. So it's important to have accessible satellite centers for every patient who can go and take help. District mental health program is not doing well across the country. The 4th important thing is, well, suicides are politicized everywhere. When a student dies of an accident or a student dies of dengue, there is no politics. Every suicide should undergo a psychological autopsy, and we don't need politicians on the roads to use mentally ill patients or those who have died of suicide for their personal gains or for their professional gains or for their political gains. This should be stopped. I have written a lot to many people, Chief Justice of different courts, but I'm going to file a PIL for that. Number 5, again, which is very important, the poor and the marginalized are being ignored across all states. Globalization blinds the bureaucrats and the policymakers toward the poor and the marginalized. Education, health, and health will be away from their hands. And what is very important here is that just like a polio tika can go house to house, just like other things can be managed house to house. The poor, 40% of the Mumbai are in slums, 40 to 50%. And screening them for mental health issues and helping them is important. There is enough evidence to say poverty leads to depression, poverty leads to suicide. 1 out of 4 people who die of suicide in India are daily wage laborers. Mental health is not only about medicines, it's not about feelings, it's also about food. And we need to see to it. And IPS as a body should not be organizing hundreds of seminars for pharma companies for medications and receptors. We're all receptor-wise, but psychosocially not versatile. Mental health needs a holistic intervention, and holistic intervention would mean culture-specific, taking all the players along and building a holistic mental system. We should take alternate systems also into our fold. We should also use the meditative practices which are useful. And for that, we need to have an open mind and not criticize Ayush ministry and not criticize Ayurveds, homeopaths, people who practice yoga or people who practice Vipassana or other forms of meditation. 2 more points and then I'll stop. What is very important to understand that the guru is culturally literate, whereas the psychiatrist and the psychologist is culturally literate. I interviewed 89 psychologists for post of school counselors in Goa, when then Chief Minister was the first Chief Minister who employed school counselors through government funding. And when I interviewed them, none of them knew except one who was Patanjali. So what is this? What are our psychology department and psychiatry departments doing? So we need to have holistic training in psychiatry and psychology in our colleges, and at least 6 months. The training should be in the communities and not sitting and just writing medications across 3 seconds. Lastly, our government is very keen to build IITs, IIMs, AIMS all over. I'm nothing against that. I'm for that. But we need more
colleges to take up, to start psychiatrist seats. I still remember the lecture of Niti Aayog gentleman, Dr. Paul, with the IMA or Association of Medical Consultants. I do not remember that, but he said we are open to give DNB seats. Please apply for that. IPS should encourage a lot of private hospitals to take up DNB seats, also to help them build their infrastructure or advise them to build their infrastructure so that we have more psychiatrists. So the central government should focus on having more psychiatrists, more colleges and universities for psychologists, medical social workers, and special educators. And actually, lastly, go to the net and check for the learning disability figures of the CBSE board. It is 0.003% of children preparing for 10th or 12th have been diagnosed early, which means lakhs of kids have been left behind. The worst is the Northeast. So all our psychiatrists of all committees should understand that we are not only here to treat 12% of patients, we are here to treat those who are between normal and illness, because when we treat stress, when we bring down stress, we'll bring down the number of depressed patients, patients who suffer from depression. So finally, 3 points: holistic treatment of mental illness, enough advocacy for building a holistic system across boards, and number 3, no building elephants in any state. Maharashtra is contemplating 2 mental hospitals, and we have mental hospitals in the state where patients are dumped. Some of them are corrupt. We are opposing that. We don't want mental health. We want hospitals in every district for acute care, intermediate care, and long-term care. No building NIMANS again anywhere. NIMANS is a great institution. They should focus on research and train people across the world, across the country. So with this, I stop, and I congratulate this committee for being open. And mental health is not about simple things about adverse effects of medicines, etc. It's also about not about 12% who are ill, but also about the other 88% who can fall ill if you do not have preventive activities for them as of now. Thank you. Very much thanks, sir, for your a big basket of suggestions and intellectual insights, which I'm sure we all will be happy to take forward. Even MHFI has been doing that in a very small scale, but in a very first responding way. We have our General Secretaries here, Dr. Sanjay, who went to Ranchi and went to the interiors of the place and aware the people about mental health concerns. We have one project running over there of tele-mental health. And congratulations. Yes, and that is again funded by the government. It's a Jan Care award we got by the METI, Department of METI. And he did that. And the biggest problem which we are facing, sir, also is that the physicians anyways are less. The medical practitioners are anyways less in those interior areas. And talking about mental health through a tele-mental health platform requires some kind of bridge with them also. हमको ना सिर्फ ऑनलाइन भी हम जोड़ते हैं, साथ में हमें उस क्लिनिक को भी जोड़ना पड़ता है एंड उसके साथ में लोगों को लेकर भी आना पड़ता है, which is a small step we are doing, and hopefully we will expand to 50 centers in the next 2-3 years. I would now like to move towards our another interesting add-up to the conversation. Dr. Deepak Raheja, sir is Dr. Deepak Raheja is the president Delhi Association of Private Psychiatrists, and we would like to have his kind view on the... Sorry, I lost you. Kind views on the...
Yes. So I would like to have your kind views on the challenges which and the differences which have in terms of accessibility of private practitioners in Delhi, because we know in government hospitals, although they are accessible, but the time which the patient can get in terms of the consultation time differs with private consultation. So how can we make what are the challenges in the issue and how is it is being addressed? What is the current scenario? And more thoughts on the theme also as well. So I recently had a patient who said that he'd gone to the OPD at All India Institute, and he said it looked very modern. There was a waiting time, but there was also a waiting time when he came to see me. So I think the accessibility at the government hospital level is also getting better. But drawing a continuum from Dr. Harish Shetty, when he says that we have to reach out to the most marginalized or the poorer section, somebody who lives in a very plush area of Delhi or a urban city of India, would eventually be able to muster psychiatric care for himself or for somebody in the family. But it is the weakest section, the poor people living below the poverty line, which is where I think we have to endeavor, because I think we are now in a millennium where we are talking about mental health being a right for all. And we are stressing again and again that there cannot be differentiation between mental illness and physical illness. So I think as we prime people, we educate them that it is important for them to ask for help. And as the government wakes up, I mean, this morning I was attending a session with Dr. Paul from NITI Aayog, and he repeated the same sentiments that the government is very open. He spoke very fondly and publicized the Telemanas endeavor. So, in the next step of Telemanas, we are almost now beginning to talk of a model where one could dial an emergency number and have a team which comprised of people who have psychosocial sensitivity, people who, a medical psychiatrist, a doctor, who could visit home and be able to provide that crisis and Thank intervention you, sir. to be able to differentiate. I would like to and try. request a small break in the flow. We have now with us our esteemed one of the panelists and guests, Shri Amrendra Dhari Singh, sir. Sir is very much, thank you for gracing our occasion. And sir is an entrepreneur and a member of parliament, Rajya Sabha from Bihar, representing Rashtriya Janata Dal. And without any more further ado, please, we are welcome our guest on the, yes, please. Mental health is one of the most it is not enough importance in this country. And with the population of 1.4 billion, there's so much of stress on the child. I remember when I was in school, how much books I used to carry. And today, when I see the children carrying a hoard of books, sometimes it seems that the weight of the book is more than the child itself, herself or himself. And then the parents tell them that you have to pass this exam, that exam. तो उसका stress तो हम बचपन से ही उसको बढ़ा रहे हैं. There are two, three things which are required in this country. एक तो all the mental health hospitals should be renamed. Mental word should be taken out. Pagal word should be taken out. And for example, with so much of unemployment here, a time comes for the child, girl or boy, that he does not get a job, and then he goes in some kind of a depression. And then the society also says कि फलाना का लड़का तो कुछ कर ही नहीं रहा है, पढ़ाई नहीं है, या something like that. So we have to tackle this problem from the very school itself by teaching them that, and as I earlier said, that ये पागल खाना, चाहे ये मेंटल है, चाहे कोई बोले कि वो साइकेट्रिक केस है, these words should be taken out of dictionary, and society should give adequate support to anybody who is suffering from these kinds of problem.
they should be treated as not as a disease, but as the peer group and the society should give support, mental and whatever way they can do. And today, it is a very unregulated sector. There's a shortage of psychiatrists in this country, and the few who are there are overworked. So this discipline of medicine should be more emphasized. And as we know that everything is very difficult in this country to promote because of the lack of resources. And basically, we have to get together and find a solution in the coming years. And whatever support as a member I can give, I'm willing to give. And with these small words, few words, I'm ending because I have to catch a flight. Thank you. Very much thanks and dhanyawad to sir. Mental Health Foundation and IPS is very, very happy to have you here in your busy schedule. And we'll surely be happy to take the words of wisdom forward. Now would again go back to our panel discussion. Dr. Deepak, if sir is there. Yeah. Yes, sir. Please continue. Yeah. So essentially, thank you very much. Essentially, what I was saying was that in continuation of telemanas, if we can get to a point where one could be able to dial a number and be able to order a mental health intervention, where the qualified people could help differentiate between a domestic emergency versus a psychiatric emergency, and be able to provide the right kind of help at that moment. That would also go a long way in being able to, provide a lot of trauma that the families go through. The second important issue that's very, very relevant is the stigma and the marginalization. And I think that is also now getting more and more attenuated. It is people are being able to talk about it in open. People who have recovered from mental illness are coming up. The promotion of self-help groups, the support systems in the self-help groups, and the ability to be able to work in tandem with various stakeholders, whether they are family caregivers, whether they are psychiatrists, whether they are psychologists. We all, muster the mechanisms to be able to work in tandem, to be able to provide the right kind of services to starting from the weakest, the bottommost link in the chain, to, of course, obviously going up, people who can afford the services and can go to private practitioners. And as the Honorable Member of Parliament was also saying, that the few practitioners who are available, considering the load of the morbidity, they are obviously also very, very overworked and overloaded. So I think that distribution of density of the availability of the number of mental health practitioners to the population, that I think also needs to be worked upon. And I think this is a great endeavor in being able to do that. These are some of my thoughts. All right. Thanks a lot, sir, for your kind words. And I'm sure we'll take forward the conversation and on various social media platforms, and also in terms of professional organizations and professional forums. Now, this brings us towards the closing of and summarizing the entire initiative. This has been a great effort by MHFI and IPS, and we are really, really thankful for this entire engagement of the parliamentarians and the fellow doctors. On a formal note, I would like to request Dr. Sanjay Kumar, General Secretary of Mental Health Foundation India, to present the vote of thanks to the entire dignitaries, and then we move further with felicitation and for the high tea. Please, sir. So good evening, all of you. Respected all the parliamentarians who have been here, Javed Khan sir Saab, our next MP, Honorable MP, just he has gone out.
Dr. Nand Kumar, Dr. Vinay Kumar, Dr. Harish Sethi sir, advisor, and all the dignitaries who are online. Really, I'm very thankful to them for their presence on this occasion. That mental health is a universal human right. As Sethi sir was just mentioning, why we are not using the Anganwadi, ladies who are working there in the remote. So I want to tell him, and that we have started doing this from the Ranchi, as Abhinav told, that we have addressed more than 120 Anganwadi Mahilaye workers in the Ranchi, and they are helping in us to getting the really mentally ill people. And I have gone to the lot of panchayat of the Ranchi and found the real mental ill people, those who have the real problem, but they are not coming up to the place where they can get this type. So we have done that. We are going with our own portal, My Hope portal, to their places to give them the all sort of facility that they can get rid of from that one. So really, I'm thankful to all of you who are here, and really this Dr. Vinay Kumar sir, that who has organized this program with MHFI and the DPS. So Rao sir is here, and I'm really thankful to him that he is here today with us. And all of you, that all the psychology students are here, that are going to be the mental health professional with the coming within 2, 3, 4, 5 years. So you have to be more to take this oath on behalf of all of us, that you are going, yes, we are, but now you are coming a generation that you will going to see the mental health people in the society. So I will thanks our organizer, volunteers, and no doubt Bhavya, Sisti, Abhinav, Gopal, and all other who are sitting over, that they have given their time, and really they have done work hard in the program which we have done in the AIMS, and now here with us. So thank you all for coming, and really it's a great opportunity for us to listen all the dignitaries, and we have listened Vinay sir, Rao sir. So thank you all of you for coming here. Thank you, sir. Thanks a lot, sir, for your kind words. With this, keeping the IPS dignitaries, MHFI dignitaries, Dr. Nand Kumar, TSS sir, Vinay sir, Harish Sethi sir, and all the dignitaries which are present online, and the parliamentarians who joined us. I would like to end with the motto of Mental Health Foundation India, which is a trademark thing which we say. It's healthy minds build healthy nation. And this we came up way back in 2003. So that's what I would like to end. And thanks a lot. And please do join us for the high tea. Thanks a lot. Yes, yes, yes. We should release them. I think ये सर ये जो है ना पैनल डिस्कशन वाला थोड़ा बड़ा करते हैं सर डाउन कर दे जस्ट थिंग ऑफ लाइक क्या है all of you join line please can I request just split this one here. We're very lucky that not all practitioners are here of the mental health. Top practitioner. Aja Gopal. No. मैं बैठ जाऊं मेरे साथ बैठोगे क्यों मैं बैठूं मैं आज उल्टा कर रहा है हम लोग बैठ जाते
ये उसके ऊपर क्रॉस के पार क्रॉस के ऊपर 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 उसके ऊपर जाइए नहीं ऊपर जाइए ना स्टिल हो जाता है इस कैमरे पे नहीं फटाफट नीता कर दे मैडम प्लीज जॉइन सर आप भी क्यों बैठे आप भी आ जाइए ना मैडम प्लीज यू आल्सो जॉइन अस आइए प्लीज आइए सबसे वेट करेंगे इधर 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 हाँ हाँ इधर मांगिए अरे इधर Thank you. Thank you. Now we will have अच्छा चलो आइए बहुत आप गाड़ी है ना